Why abroad, not India? The success of Mangalyaan in the first try only was a tight slap to those Indians who flew to NASA saying ISRO has no future. Hello everyone, I'm Tisha Jain from Shyam Lal College Evening, currently pursuing BCom Honours first year. Today's topic for this talk is why abroad, not India, and I'll be covering some of the higher objectives like Indian youth and its mindset, how Indian parental teaching is leading migration, how Indian abroad success stories are influencing our thinking, why is it so needed to stop brain drain in India, or how to overcome with this problem. Let's start with a basic definition of brain drain, as this whole topic revolves around it. So, brain drain is defined as the migration of health personnel in search of better standard of living and quality of life, higher salary, access to advanced technology, and more stable political conditions in different places worldwide. But what are the reasons behind this? As Professor Milind Soni, a scholar, talked about the causes of this brain drain, he pointed out some of the major points like इंडिया में हर साल 10 लाख फ्रेश जॉब्स निकलती हैं प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स को मिलाकर पर एक इनकम टैक्स डाटा के सर्वे से पता चलता है कि 3 लाख जॉब्स ऐसी हैं जो 15 लाख से ज्यादा का पर एनम प्रोवाइड करती हैं सैलरी पैकेज पर सिर्फ 30 हजार जॉब्स ऐसी हैं जो स्टार्टिंग सैलरी पे करती हैं ₹10 लाख पर एनम तक बट क्या ये कोई इंडियन कंपनी प्रोवाइड कर रही है well hardly any Indian company is serving the Indian customer or offering a salary package of 10 lakh per annum. Only multinational companies are serving these types of jobs. It is impossible for these countries to work in such a way that every year more than 30 lakh students pass out with 45,000 colleges and to mean, provide them a meaningful interview, it is difficult for every job purposes. So what they do, what big private companies do, वो कुछ प्राइवेट कंपनीज बड़े इंस्टीट्यूशंस और कॉलेजेस को हैंड ओवर कर देती हैं जिससे वो शॉर्टलिस्ट कर सके अपने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को hence as we all know the madness of competitive exam closing ranks and coaching classes in high school or especially placement packages in colleges but are are they always capable of providing all the things to all the students? No. So what parents do is put their students or put their children to foreign university so that they can overcome with this thing and their children do not have to face such things. But what are the solutions regarding this? There is a clear role for the elite central university. They should look at the problem of day and formalize and convert them into business models and job definitions which offer solutions that deliver value. What does that mean, deliver value? जिसका असलियत में कोई सेंस हो और जिसको पाने के लिए लोग काम करें ऐसी जॉब प्रोवाइड हो एक ऐसी जॉब डेफिनेशन बने जिसको देखकर बिजनेस मॉडल्स अच्छे से पता चल सके और जिसके लिए बहुत ज्यादा लॉन्ग प्रोसेस ना करना पड़े और सबसे बड़ी बात है कि हमें सपोर्ट करना पड़ेगा अपने इंडियन लोकल इंस्टीट्यूट्स और एंटरप्रेन्योर्स को क्योंकि मेजर सेक्टर लोकल इंस्टीट्यूट्स और एंटरप्रेन्योर्स पे ही डिपेंड करता है और जब तक वो डेवलप नहीं होंगे तब तक इंडियन डेवलपमेंट रीच नहीं कर सकता like there is a national clean air program that has offered rupees 300 crore to over 100 cities administrations across to India to initiate a basic study for the problem of their studies or their cities. But that is languishing because of bureaucratic cloth incompetence. But principally because there is no clear idea on what to do or there is no vision for regarding this. Every year, just because of these reasons, Indians go abroad for overseas employment purposes. In 2020, in 2020, 18 million persons from India were living outside the country of birth. Other countries with a large diaspora population like America, Russia, US, etc. और सिर्फ यही नहीं
1990 में 7 मिलियन इंडियंस इंडिया से बाहर रहते थे. Cut to 2017, 17 millions has migrated out of the country, an increase of 143%. Isn't it worrying? Not only this, over 5 lakh Indians have gave up their citizenship since 2015, and more than 23,000 millionaires have left India since 2014. In fact, India has lost the highest percentage of high net worth Indians with assets over $1 million to out India migration since 2014. इनफैक्ट अब तो एनआरआई का मतलब ही शायद नॉट रिटर्निंग इंडियंस हो चुका है. और सिर्फ ऐसा नहीं है कि हाई इनकम वाले या फिर हाई क्वालिटी वाले लोग ही इंडिया छोड़ रहे हैं, बल्कि मोर देन हाफ ऑफ द टॉपर्स ऑफ क्लास 10th and 12th between 1996 to 2020 have left India for overseas. Here, some of the data showing the numbers of students residing in abroad or studying in abroad. Here in this data, we can see the highest share of number of Indian students is divided in among Australia and Saudi Arab. That is 75,000 and 80,000 students respectively. But also there are many other countries like Ukraine, Oman, New Zealand, Russia, Philippines, Bahrain, Kazakhstan, where in total more than 1,80,000 students resides for studies. Okay, so as we got to know how many students are there living in outside world than in India. But the point is with what is Indian youth and its mindset. According to a BCG survey, 90% से भी ज़्यादा Indians इंडिया में काम ही नहीं करना चाहते. They are willing to move abroad for work purposes. This is worrying, isn't it? If all the top talent would go abroad, who will stay back for the development of our own company or country? This is that BCG's data that shows more than 90% of the Indians' willingness. And it is not only these 90% are willing. In fact, it is increasing with an increasing rate of 10% per year, every year. But the point doesn't end here. This data arises a new question that why are they willing to move abroad? और या फिर ऐसा क्या है जो इंडिया प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है और बाहर की कंपनीज प्रोवाइड कर पा रही हैं? So, after all the research, we can see some header points or reasons for this. The very first reason could be compensation. Generally, people strive for a better compensation against their work. So, a higher compensation means a good standard of living, and everyone would appreciate a good standard of living. Also, growth plays a vital role in an individual's career. People tend to see a better growth opportunities in foreign countries, which can be a major reason for their migration. In fact, infrastructure, healthcare और education भी एक important role play करता है influence करने को जिससे people, Indian youth emigrate हो. और सिर्फ यही वजह नहीं है कि Indian youth emigrate हो रही है या फिर migrate हो रही है, बल्कि Indian youth is very conscious about its future as the politics and corruption is taking over their growth opportunities from them. Even the well-educated and most talented people of India are not willing to work in India, especially when it comes with a proper profession like doctors, nurses, scientists, etc. और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एक बड़ा रीजन बन जाता है लोगों का माइग्रेट होने का और सेटल होने का, क्योंकि लोग एक हाई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वाली जगह में रहना और काम करना ज्यादा पसंद करते हैं एज कंपेयर टू अ लो पॉलिटिकल कंडीशन प्लेस, क्योंकि वहां पर उनके पास एक्सेस होता है उनके राइट्स का, उनके पास यूजेज होता है, उनके पास बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और उनकी जॉब और करियर अपॉर्चुनिटीज ऑप्टिमम होती है. और इन्हीं कारणों की वजह से the Indian youth is willing to work in OECD countries like Austria, America, Denmark, France, Germany, Canada, and many more. But what does this OECD stands for? This OECD stands for Economic Cooperation and Development. ये एक ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो बेटर पॉलिसीज को बिल्ड करने के लिए और अपनी मोटिव और इसका मोटिव होता है प्रॉस्पेरिटी, इक्वालिटी, अपॉर्चुनिटी और वेलबींग को दर्शाना अपनी पॉलिसीज में.
And this is the picture that depicts how numerous countries have become OECD member in different time periods. In total, there are 38 OECD member countries as of 2021. अब इन सब बातों से हमें ये तो पता चल गया कि इंडियन यूथ क्या चाहती है. Indian youth want a felicitative and safe environment. The youth prefer a facilitative environment whereby the state acts as a facilitator and not a regulator. It plays a proactive role addressing the youth concerns. Moreover, what they really want is a corruption free environment whereby merit prevails and there is a rule of law, not a rule of man. बट इससे हमें ये तो क्लियर हो गया कि इंडियन यूथ क्या चाहती है और क्यों चाहती है. बट आखिर कौन सी ऐसी पहली चीज होती है जो हमें सोचने पे मजबूर कर देती है कि हमें भी अब्रॉड जाना चाहिए, या फिर वो कौन सा ऐसा इंसान होता है या कौन सी ऐसी सोर्स होती है जो हमें अपने थॉट प्रोसेस को एनकरेज करती है कि हम इस वे में भी सोचें. सो द वेरी फर्स्ट सोर्स इज आवर पेरेंट्स. what Indian parents teach their children from very beginning is like अच्छे से पढ़ो, अच्छे से लिखो, क्या पता बड़े इंसान बन जाओ, और फिर यूके, यूएस, कनाडा ऐसी बड़ी बड़ी जगहों पे काम कर रहे हो और फिर इतने कामयाब हो जाओ कि हमें भी वहां ले जा पाओ. एंड द टाइम फिर हमें भी वहां ले जा पाओ comes it comes with a responsibility, a task for the child which he or she has to complete anyhow. Or even if your parents are not putting this responsibility or this task on you, उन्हें ज्यादा खुशी होगी ये देखकर कि आप एक अब्रॉड की कंपनी में अब्रॉड में काम कर रहे हैं, बल्कि ये देखकर कि आप एक इंडिया में काम कर रहे हैं, इंडियन कंपनी में. क्योंकि उन्हें भी यही लगता है कि अब्रॉड कंपनीज आर बेटर फॉर योर फ्यूचर. एंड सिर्फ पेरेंट्स ही नहीं करते ऐसा, ऑल्सो योर टीचर्स डू द सेम. what they do to feel you make or to make you feel motivated to study in a better way. They create a benchmark. और हमने किसी ना किसी टीचर के मुंह से ये तो सुना ही होगा कि तुम्हें पता है हमारा एक बहुत अच्छा और बहुत समझदार स्टूडेंट हुआ करता था, वो बहुत अच्छे से पढ़ता था, मतलब उसमें कोई कमी ही नहीं थी, और इस वक्त वो अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी में एक बहुत अच्छी पोस्ट पे काम कर रहा है. And these stories, these storytelling things always creates a benchmarks for us that we would even love to reach over. और सिर्फ यही नहीं कि टीचर्स हमें बोल रही है, हमारे पेरेंट्स बोल रहे हैं, हमारी जिंदगी में एक टाइम ऐसा भी आता है कि हमारी कोई ना कोई अंकल और आंटी यूके, यूएस या कनाडा जैसी जगह में रह रही होती हैं और हमेशा हमें मोटिवेट करती हैं, हमेशा हमें अच्छाइयां बताती हैं वहां की, या फिर हमेशा हमें कोई ना कोई ऐसा पॉइंट बताती है जिसपे हम ये सोचें कि शायद वो सही कह रही थी, या फिर शायद मुझे भी अब्रॉड जाना चाहिए, मुझे भी उनकी कंट्री में जाना चाहिए, मुझे अच्छा काम मिल जाएगा, मुझे अच्छी सैलरी मिल जाएगी, और मेरे पेरेंट्स को कितना प्राउड होगा कि अगर मैं किसी अमेरिकन कंपनी में अमेरिका में जाकर काम करूं. सो दीज थिंग्स लीव्स अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन वंस थिंकिंग एंड बिहेवियर, एंड this leads to a yearning to taste and live life in a western country. In terms of western country, it is not from a bygone era, it is not a year ago, it is all over from over the years ago. Millions of young talented Indians from various disciplines have left our soil in search of better opportunities. For a long time, the idea of people of moving to different company or countries was seen as a baggage of honor with a feather in the cap, as it were. And the most singularly opted dream for dream jobs is the place where everyone would like to achieve something, and that is America. जब भी हम ये सोचते हैं कि हमारी ड्रीम जॉब कहाँ पूरी हो या फिर कैसे पूरी हो, तो सबसे पहले अमेरिका ही एक ऐसी जगह है जो हमें याद आएगी कि अमेरिका में काश जॉब मिल जाए, अमेरिका में घर हो जाए, बिकॉज इट इज अ वेरी फेमस प्लेस फॉर वर्किंग प्लेस. एंड यहाँ पे तो हमारी सोच शुरू होती है. बट जैसे ही हम किसी सक्सेस स्टोरी को देख लेते हैं, किसी इंडियन सक्सेस स्टोरी को, जब भी कोई इंडियन सक्सेस स्टोरी लाइमलाइट में आती है, वो हमारी थिंकिंग, हमारे बिहेवियर, हमारे करियर की अपॉर्चुनिटी, हमारे सोचने का तरीका, हर चीज को चेंज कर देती है. And we have numerous examples for it. We have numerous examples for Indian abroad success stories. The latest one that could be answered is
Parag Agrawal, the new CEO of Twitter. And not only him, there are many like Indra Nooyi, ex-Pepsi CEO, Anjali Sood, Vimeo's CEO, IBM CEO Arvind Krishna, Sundar Pichai, the most famous Alphabet CEO, or you can say Google CEO, Satya Nadella, Microsoft CEO. So there are many examples of Indian abroad success stories. बट हैव यू एवर थॉट कि कोई ऐसी कंपनी है जहां इंडिया कोई ऐसी इंडियन कंपनी है जहां पे अब्रॉड का इंसान हो सीईओ या फिर किसी भी और देश का या फिर किसी भी और स्टेट का नहीं होता यहाँ पे बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा नेपोटिज्म होता है इट्स लाइक हमारी जो मोस्ट ऑफ द वर्किंग प्लेस है जो बेस्ट कंपनीज है इंडिया की उसमें वो फैमिली बिजनेस चलाती आ रही है और फैमिली बिजनेस में न्यू सीईओ उनके असेंडर्स ही बनते हैं कोई आउटसाइडर नहीं बनता जिसकी वजह से एक अदर कंट्री में काम करना और सीईओ बनना ज्यादा आसान हो जाता है एक इंसान के लिए दैन इन बीइंग अ सीईओ ऑफ एनी इंडियन कंपनी Also, when Parag Agrawal became the CEO of Twitter, Elon Musk shared some of the pictures on Twitter that depicts how Parag Agrawal has taken over the place and let the ex-CEO out of the boat or out of the place. He also mentioned USA benefits greatly from Indian talent, and we have all the perfect examples for this. And also, there was a big meme roaming around at that particular time. Padhega India, tabhi to badhega America. And it is being carried forward from years ago. और यही नहीं टाइम्स ऑफ इंडिया ने कुछ साल पहले एक सर्वे के थ्रू रिवील किया था कि एक गवर्नमेंट सर्वे रिवील करता है 12% of scientists and 38% of doctors in the US are Indians और नासा में 36% इंडियंस होते हैं मतलब हम कह सकते हैं हर 10 में से 4 इंडियंस ही होते हैं and if it is not that enough to satisfy Indians' powerness in the scientific and corporate field, then digest this one thing that 34% employees at Microsoft, 28 at IBM, 17 at Intel, 13 at Xerox, and more than 12% at Google are Indians. और सिर्फ इन्हीं कंपनीज को प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं इन्हीं कंपनीज को हम इंडियन टैलेंट एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं but also India is a big exporter, is a major exporter of healthcare workers to developed nation, particularly to Gulf Cooperation Council countries. You can say, for example, Europe or any other है कि 69,000 Indian trained doctors were working in UK, US, Canada, and Australia in 2017. And in these four countries, 56,000 of Indian trained nurses were working in the same year. बट हमने ये तो देख लिया कि कितने लोग बाहर हैं और क्यों बाहर हैं बट हमने कभी ये नहीं सोचा कि आखिर अगर वो इंडियंस इंडिया में से बाहर नहीं जाते तो अगर इंडियन टैलेंटेड लोग जो बाहर के कंपनीज के अच्छी बड़ी कंपनीज के सीईओ हैं अगर वो इंडिया में ही रहते और माइग्रेट ना होते तो अगर उन्हें काम के लिए बाहर ना जाना पड़ता तो इंडिया आज कैसा दिख रहा होता and for that it has been thought upon that India would have been 30 years ahead of its current state if all of its talented people had not gone overseas. अगर Indian talented people इंडिया में ही होते या फिर कुछ सीख कर वापस इंडिया आ चुके होते तो आज हम 30 साल आगे होते बट वी आर नॉट बट स्टिल अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है इट्स नॉट द एंड we have solutions for it and we have to take it step by step it's the very नहीं कर सकते तो चलिए देखते हैं कुछ सॉल्यूशंस को जो ये बताते हैं कि हम ब्रेन इंडिया को डेवलप करना होगा और वो किन किन चीजों से करना होगा वो हम देखते हैं सबसे पहले मेल और फीमेल इन टर्म्स ऑफ वर्क प्लेस वर्क एनवायरनमेंट एक एसेंशियल चीज होती है जो सेफ होनी चाहिए एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर
दोनों के लिए। क्योंकि अगर वर्क एनवायरनमेंट सेफ रहेगा तो मोर एंड मोर पीपल विल बी एबल टू वर्क over jobs or night jobs or any type of job if they feel the environment is safe, if they think the country is safe to work in at 12 p.m. also or 12 a.m. also or to 6 p.m. also. बट सेफ कंट्री, ओके, सेफ कंट्री बनना एक बहुत 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 बड़ी चीज होती है बिकॉज उसमें बहुत सारी टर्म्स आ जाती हैं। सो हमें इस वक्त सेफ कंट्री में सबसे पहले हमें अपने आप से शुरुआत करनी होगी। हम अपने आसपास वालों को कैसे सेफ फील करवा सकते हैं, हम अपने वर्कर्स को, अपने कलीग्स को कैसे फील करवा सकते हैं कि हाँ हम हैं उनके लिए एंड वी आर ऑलवेज देयर फॉर देम अगर कुछ भी होता है तो। सो वी आर द फर्स्ट वन हु हैज टू टेक द फर्स्ट स्टेप, क्योंकि जो फर्स्ट स्टेप लेता है वही एडवांटेज पाता है, और अगर हमें एडवांटेज चाहिए तो हमें फर्स्ट स्टेप लेना ही होगा। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज रूरल डेवलपमेंट। बट रूरल डेवलपमेंट क्यों इतना जरूरी है? रूरल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है बिकॉज आज भी इंडिया की मोस्ट ऑफ द डिवाइडेड एरिया और पॉपुलेशन रूरल में ज्यादा रिसाइड करती है दैन इन अर्बन। और एक बार अगर रूरल एरिया डेवलप हो गया तो हम इंडिया में मोस्ट ऑफ द सिनारियो चेंज हो जाएंगे। लोगों का सोचने का नजरिया, लोगों की बैकवर्ड सोच, लोगों का काम करने का तरीका, हर चीज चेंज हो जाएगी। क्योंकि रूरल डेवलपमेंट एक ऐसा की पॉइंट है जिसमें सिर्फ हम रूरल डेवलपमेंट से सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि रूरल डेवलपमेंट ही होगी, सिर्फ रूरल एरियाज ही डेवलप होंगे, उससे अर्बन एरियाज भी डेवलप होंगे। क्योंकि रूरल एरियाज के लोग अर्बन एरियाज में नहीं जाएंगे अगर उन्हें ऑलरेडी वहां पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है उनके काम की, उन्हें वो एनवायरमेंट मिल रहा है, उन्हें वो जॉब्स मिल रही हैं, तो वो अर्बन एरियाज में नहीं जाएंगे। और अगर वो अर्बन एरियाज में नहीं जाएंगे तो वहां के लोग वहीं रहकर काम करना ज्यादा पसंद करेंगे क्योंकि उनके पास भी अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी। सो रूरल डेवलपमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टैकलिंग अंडर एम्प्लॉयमेंट। फिर हम अंडर एम्प्लॉयमेंट को कैसे टैकल कर सकते हैं? प्रधानमंत्री ने हमें बताया है कि हमें जॉब सीकर ही नहीं, हमें जॉब क्रिएटर बनना है। बट आखिर हम कैसे बन सकते हैं जॉब क्रिएटर? जॉब क्रिएटर बनने के लिए पहले हमें कुछ सीखना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। बट कई बार हमारे ड्रीम्स इतने अच्छे होते हैं, अ, हमारी पॉलिसीज इतनी अच्छी होती है जिसपे हम काम भी कर सकते हैं, हम जॉब क्रिएटर भी बन सकते हैं, अपना खुद का बिजनेस चालू कर सकते हैं। बट बिजनेस डेवलपमेंट के जो प्रोसेस होते हैं या फिर बिजनेस का क्रिएशन का जो प्रोसेस होता है इतना लंबा होता है कि 50% लोग वो उस प्रोसेस से जाना ही नहीं चाहते होते, बिकॉज उन्हें लगता है कि इतना लंबा प्रोसेस है तो ऑफ कोर्स सी बात है अगर उसे कम करवाना है तो करप्शन देनी पड़ेगी, ब्राइब देनी पड़ेगी, और कुछ लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते तो वो अपना थॉट छोड़ देते हैं कि वो बिजनेस खोलेंगे। और जो बाकी के बचे हुए 50% है वो आधे रास्ते में ही बिजनेस बनाने के पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उन्हें बाद में पता चलता है कि इस प्रोसेस के बाद वो भी होगा। वो 50% लोग एजुकेटेड होते हैं जिन्हें पता होता है और वो पहले ही रुक जाते हैं, और ये 25% लोग बाद में पता चलता है और तब रुक जाते हैं। सिर्फ 25% बाकी के जो बचते हैं वो एंड तक पहुंचते हैं, और उनमें से भी जो बेस्ट होता है सिर्फ वही काम कर पाते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स जो चीज अच्छी होगी वही बिकेगी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अंडर एम्प्लॉयमेंट को टैकल करें, और हम एक ऐसा पॉलिसी बनाए जिसमें हमारा बिजनेस डेवलपमेंट का प्रोसेस, हमारा टैक्सेशन का प्रोसेस, हमारा बिजनेस को क्रिएट करने का प्रोसेस, किसी नई एंटरप्रेन्योर को आगे बढ़ाने का प्रोसेस थोड़ा शॉर्ट हो जाए, थोड़ा सिंप्लीफाइड हो जाए, जिससे लोग को डर ना लगे देखकर कि नहीं हम तो कर ही नहीं सकते काम, ये हमसे होगा ही नहीं। हमें एक ऐसे ऐसे ही हम सिर्फ टैकल कर सकते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट को। एंड प्रॉपर पेमेंट पॉलिसीज, वेल प्रॉपर पेमेंट पॉलिसीज मोस्टली वेज बेस्ड लोगों के लिए है जो लेबर होती है, क्योंकि हमें पता है कहीं ना कहीं कि हर लेबर को उनके हक के पैसे नहीं मिलते हैं। हर लेबर को उतना पैसा नहीं मिलता है जितने का उन्होंने या तो काम किया होता है, या फिर उतने अच्छे से वो नहीं, वो या तो उन्हें वो सैलरी नहीं मिलती है, वो वेजेस नहीं मिलते हैं, या फिर वो जिस टाइम पे मिलने होते हैं उससे कहीं ज्यादा लेट मिलते हैं। और क्योंकि उनके पास कोई राइट नहीं है अपनी वेज को वापस लेने के लिए, अपनी वेज जो किसी ने मतलब किसी बड़े पेयर ने हथिया ली है उससे निकलवाने के लिए एक पॉलिसी बहुत जरूरी है।
क्योंकि जब तक प्रॉपर पेमेंट की पॉलिसी नहीं बनेगी, किस इंसान का वर्क करने का काम करने का मन करेगा, जब उसे पता होगा कि हाँ हमें तो इसके पैसे ही नहीं मिलने अच्छे से। अगर हम 100 रुपए का काम करते हैं तो हमें 50 रुपए मिलेंगे। सो कोई भी फिर वहां उस जगह पे काम नहीं करना चाहेगा। और जब किसी और कंट्री में जॉब मिलेगी और वहां पे ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए एक प्रॉपर पेमेंट की पॉलिसी होना। टैक्सेशन प्रोसेस, क्योंकि टैक्सेशन प्रोसेस जीएसटी के आने से वैसे काफी कम हो चुका है, मतलब बहुत सिंप्लीफाई हो चुका है, बट स्टिल इसे और सिंप्लीफाइड होना बहुत जरूरी है। लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक छोटे से टैक्सेशन अगर बहुत as except the bigger companies or the bigger taxation workers, प्लेसमेंट को बढ़ाना होगा हमारी कंट्री में। और हमारे वर्क कल्चर को, जो हम ये सोचते आते हैं कि हमें उस इंसान को, उस वर्कर को, या फिर उन टाइप के लोगों को ज्यादा काम देंगे, या फिर उस कास्ट के लोगों को ज्यादा काम देंगे, या हम ब्लैक्स को काम नहीं देंगे, हम सिर्फ व्हाइट्स को काम देंगे। उस चीज को हमें चेंज करना होगा, उस चीज को हमें वो एक बहुत बड़ा कंसर्न बन जाती है। क्योंकि कुछ लोग बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, और उनके साथ जो बीत रहा होता है उसकी वजह गुड वे। सो पर ये तो ठीक है, सॉल्यूशंस हो गए हमारे, पर क्या मेरे बोल देने से या फिर मेरे लिख देने से ये सॉल्यूशंस काम करने लगेंगे? या फिर सिर्फ मेरे कह देने से गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज निकल जाएंगी? नहीं, उसके लिए हम सबको काम करना पड़ेगा। और हम सब कुछ गवर्नमेंट पे भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि गवर्नमेंट की, हमारी इंडियन गवर्नमेंट की पॉपुलेशन इंडिया की पॉपुलेशन की एक चौथाई भी नहीं है। और देन हम ये सोचें कि सिर्फ गवर्नमेंट सब कुछ करेगी, हमारी तो कोई जरूरत ही नहीं है उसमें, तो ये गलत है। हमें, जब तक हम खुद से अपना स्टेप आगे नहीं लेंगे, तब तक बाकी के स्टेप्स पीछे ही रहेंगे। क्योंकि हमें एक मूवर एडवांटेज चाहिए, तो उसके लिए मूव करना पड़ेगा। और मूव करेंगे तो हम खुद देखेंगे कि कितने चेंजेस हो रहे हैं, कितने, सिर्फ हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो मैं करूंगी अपने लिए करूंगी, या फिर जो आप करेंगे सिर्फ अपने लिए करेंगे। आप अपने आने वाली जनरेशन के लिए कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, या फिर आने वाली जनरेशन के लिए करेंगे जो भी करेंगे। क्योंकि सिर्फ आप तक सब कुछ सीमित नहीं है, या सिर्फ मुझ तक सब कुछ सीमित नहीं है। नथिंग हैज एनी एंड, एंड वी हैव टू मेक अ न्यू स्टार्ट फॉर इट। So I would like to end this talk with a quote that we wish to work together, we wish to live together, we wish to complete the wishes together. So now I would like to call our respected guest for his remarks about the talk. It's for me to respond. Yes, 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 sir. Yeah. yes. The two things about the GSTS and little about this talk. So over to you, Dr. Ramgati ji. Okay, sir. First things first, it's my privilege to be here. And as Tisha said, कि Mani sir is the mentor, and Mani sir is responsible for the success of this GSTS thing, and which is, and this is the 56th episode of this Yes, talk this is the series. 50. Yes, Yeah. 56. That's a big number, and this society is organizing this continuously and without any fail. It's a great achievement. First things, and and now I just move to the talk uh, about the quality of the talk. I thought she is the first year student, and He's the first year student. first year student, but it's a well researched. It was a quite well researched PPT, and even better presentation, and she was bilingual, so it is even good, right? And she touched upon almost everything that I had in mind, that why brain drain takes place,
what are the psychology behind it, what are the economic rationales behind it. But I want later, after the end of my uh, short speech or short opinion, I would like to go back to the map that she had uh, presented, one map in which respondent students from almost 90% of Indians would like to visit other countries for job purposes, while in the first column there was China, where only 10% of the Chinese were willing to go abroad, and there were other countries as well. In the categories of India, we had some other developing countries as well, Egypt and others. So that was that presentation, that part of the presentation itself said a lot. How we think, what we think. Now the point, and she had made in her presentation quite categorically that it is it is that and one more point, that 70,000 of the doctors and 59 or 60,000 nurses are outside India. And if you look at the health scenario in our own country, health infrastructure, typically the human power in health sector, uh, we have a massive shortage of these kind of human personals, right? On the one hand, we have shortage, we are not finding enough doctors, qualified doctors, trained nurses, and on the other hand, I had not seen such data, but I believe that your data is quite correct. So 70,000 doctors, 60,000 nurses are working outside. And if you look, and the and what the prevalence of disease in our country is next to no other country. So we need those doctors here, we need those nurses here, and we have somehow not managed to retain them. So this is a quite problematic thing. So and typically we have seen in the last couple of days, or last week, that how students are facing different kinds of problem in Ukraine and the surrounding areas. So it is not that it is so it is how to judge whether it is good to go abroad for if they are paying good remuneration, or other infrastructure facilities are there, or they have better training facilities so that we can upgrade ourselves. So that is one of the advantages, but there are disadvantages of going abroad as well. You had suggested that uh, the safety part, that they feel quite secure and safe, but what about the safety of the students that were studying in Ukraine? So time so it is for the students to decide whether if I am qualified, if I believe in myself, do we have the opportunity in India? So you also always have a trade-off kind of thing, because in India it as well, we have enough job opportunities, right? We have enough public sector undertakings. They provide good remuneration, as well as because they are public sector undertaking, so they have enough kind of social security provisions as well, right? And remaining in your own country gives you a kind of safety that you do not get elsewhere, right? So this is one of the things that students should have. Students have to judge on their own, because they are the best judge, because it is their own life that will uh, take the course after their decision. So it is their own decision, they are the best judge to choose for the course of action after their graduation. But and what
issues you also touched. Yeah, one particular example. I just want to add to your discussion something, because your discussion was quite beautiful. That's why I wanted to uh, uh, add something. I will just give you one anecdote. Uh, in UP, the cost of becoming a doctor, if you go for any private institute, good kind of private institute, those who have proper facilities and medical institute, and it takes 5.5 years, or close to 5 years after you become a doctor. So the cost is 1 crore 15 to 20 lakhs. So 1.25 crores is the cost of becoming a doctor in Uttar Pradesh. While in Ukraine or Poland, the cost, taking into account the accommodation cost, fooding and lodging, etc., plus tuition fees, plus any other fees, it amounts around 25 to 30 lakhs for 5 years. Add 1 lakh to and fro for air tickets. So not more than 30 lakhs. While here you will have to spend more than 1 crore, 1.25 crore. So this is again one of the reason why uh, a student from middle class would is forced to go abroad, because the cost of becoming a doctor is 5 times more in India than is the case in Ukraine or Poland, or any like countries. So this is one of the reasons behind brain drain of doctors. That's why our students move to abroad, because they cannot simply afford. Once you are becoming the doctor, and if you get a job there, then there is probably as student sees no point in returning back, because you are settled there. You have acclimatized yourself uh, with the geographies and the uh, localities. So we'll have the tendency to not to return back. So eventually, what can we do? A state has to assume a central role, because we are a welfare state, not a police state. Uh, Simply defending our territory from the external aggression and maintaining law and order with adequate amount of policing is not the role of a welfare state. Right? Government not only be a facilitator by maintaining law and order, by maintaining safety, but it also has to be a proactive employer. Because all developed countries, if you look at that, you are a history student, and later on you must be able to, or you must be required to study, or you, maybe I am not aware of the syllabus of history. So, but you will be required to study economic history of Japan, or economic history of United Kingdom, or economic history of USSR, or United States, or France. You will notice that at the initial stage of development, that at which we are, they were at our level in probably 1850. So after industrialization, after the initiation of industrialization in those countries, their government assumed a proactive role in education, in provisioning of health, and in provisioning of social security. Right. So these are the social sectors where government has to not only become a facilitator, but it has to assume a direct responsibility of a provider as well. So it is not enough to just say that instead of seeking employment, you have to be a generator of employment. So there may be some anecdotes that somebody had some brilliant idea, as somebody come up with a kind of uh, a project in which 50 people were employed, and they were paid good salaries. But look at the volume of the problem.
Look at you had, as you had suggested, 30 lakhs graduates pass out each year from 45,000 colleges. So who is going to provide remunerative jobs to those 30 lakh graduates? Anecdotes and one or three those creams, the reference to some creams, some few gentlemen that they have done this, that is not going to work, because simply of the gravity of the problem. Volume, look at the volume, how voluminous is the problem of unemployment we have. So government has to assume, government has to think, government has to spend, not only on the education and health, but also on employment. We heard a lot about various ministries, but have you heard of labor ministry recently? There is labor ministry in the uh, cabinet of the central government, as well as the cabinet of the what you say, state governments. But these are the ministries which have relegated to almost nothing, right? But there is the role. They are there to protect the service conditions of the laborer. If some company hires and fires after some time, who is going to take care? The labor laws in our country was and has been quite sound, quite and has teeth, had teeth, but now they are being relaxed in the name of ease of doing business. Right? So basically, this means ease of doing business means hire and fire policy, right? So ease of getting employment should be the main thing. Instead of, in India, we have businesses have all the kind of opportunities to uh, make their way out. They can do anything. It is the employee who have to struggle. If they are fired after getting an employment of 2 months, there is no way that they can get through, right? So these are the things that as a scholar, as a budding scholar, we must think, right? Because we have to just look at the thing as they Yes, estimate. sir. Yeah. Mm, definitely. So, and overall, your presentation, as I had started, okay, it didn't look like it is the presentation of a first year student. Good. So well done. Okay. Over to you, Manvi. Thank you, sir. Thank you so much, sir, for your words. Now, moving ahead, I would like to call the speaker for next week, Mr. Ishant, to present a brief about his topic. Good evening, one and all present here. My name is Ishant Sharma, student of SGTB Khalsa College pursuing political science honors. Next week, I will be speaking on the bilateral relationship between South Korea and Japan. From foes to fragile friends, South Korea and Japan remains as the two most advanced technological rich countries. But do you know that these two countries remains as the neutral enemies of each other? In this umbrella topic, I would like to highlight few points which I gonna put my emphasis on. Historical bitterness. वर्ल्ड वॉर टू के दौरान जब जापानी सैनिकों का कोरियाई लोगों पर अत्याचार, वर्ल्ड वॉर टू के बाद जब जापान और कोरिया के बीच में टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स, ट्रेड इश्यूज, कॉमर्शियल इश्यूज, उसके बाद दोनों देशों का कॉमन कंसर्न नॉर्थ कोरिया और चाइना, और एक नई उम्मीद से नया कंक्लूजन और अमेरिका की क्या भूमिका रही इसके बीच में. सो आई विल बी स्पीकिंग दिस टॉपिक नेक्स्ट वीक. सो I hope that you will join my 57th graduate scholar talk show, which will held on 13 March. Till then, stay tuned, stay safe. Thank you so much. Thank you so much, Ishant. So now moving ahead, as you all know that we award the Speaker of the Month title. So for the month of February, we had speakers
First is Divya Tyagi speaking on 6th of February on the search of beauty. Next, Kashish Singh on 13th of February speaking on parallel cinema, a genre from multiplex to Netflix. Next was Prachi speaking on population paradox in India and Chandni speaking on recalling Black history. Out of that, our team has decided that the Speaker of the Month title of February goes to Chandni. So, Chandni, I would like you to please share your experience with us. Thank you, Manvi. And I would first congratulate Tisha for that excellent talk on abroad and the brain drain that India is currently undergoing. So thank you, Tisha, for that talk. And where do I start? I remember that when I got this invitation from Shubham uh, a couple of weeks ago, that was in itself a huge honor. And the team has, from I got this invitation somewhere around January, and the team was in touch with me throughout the time I was preparing for the presentation, that is till the end of February. And we had this, we have a pre-meet before the talk, and the team provided such constructive feedback during that time. And the entire experience in itself was so rewarding and was so honoring in itself, that this huge honor that has been bestowed upon me by the team is just an icing on the cake. So thank you so much to the graduate scholars team for this honor. And I to think that to consider that this presentation of mine was worthy of this honor, I have no words to thank you. Thank you so much. Thank you, sir. Manish sir was there with me, so thank you, sir, for that feedback. And Shubham, Manvi, Ajay, Subhi, thank you so much. You're doing an excellent job. Looking forward to many talks of yours, and hoping to be called for future talks myself. So thank you very much. Thank you.